So students, now we're going to discuss about vaginitis. So first you need to know what is vaginitis. So basically vaginitis is an inflammation, or you can say infection that will lead to changes in the vagina. What changes? Like there will be discharge, there will be intense itching, there will be malodor and pelvic discomfort. So let's write it down. What is the definition of vaginitis? Vaginitis refers to infection, inflammation, and changes in the vaginal flora. This will lead to what? When all this happens, this will lead to discharge, malodor, pelvic discomfort, and most importantly, there will be pruritus, which is intense itching. Okay. Now there are various kind of vaginitis. So basically you need to know the main types. What are those? 3 types are there. 3 types. First one is what? First one is bacterial vaginitis. Second one is trichomonas vaginitis. And third one is what? Third is candidal vaginitis. Third one is candidal vaginitis. Now we will discuss about each of them one by one. So first one is bacterial. As you guys know, in our vagina normally bacteria is present. Which bacteria is present? That is lactobacillus or daughter line bacillus is present. So normally in vagina, lactobacilli, or what is another name? That is daughter line bacilli is present. Okay. इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? This bacteria has hydrogen peroxide which will maintain the acidic pH of vagina. So this will have what? Hydrogen peroxide, and due to this it will maintain acidic pH of vagina. Okay. Now what is happening here in bacterial vaginitis? ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है ना, इसका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. देयर विल बी डिक्रीज इन lactobacilli, or you can say daughter line bacilli. और अगर ये बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज हुआ तो एसिडिक पीएच भी मेंटेन नहीं होगा. तो क्या होगा? अब वजाइना में अदर बैक्टीरियाज रेदर देन द नॉर्मल बैक्टीरिया
जो गंदे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कौन से बैक्टीरिया? देयर विल बी इंक्रीज ग्रोथ ऑफ गार्डनेला वेजिनालिस. Yeah, you can say there is increased growth of some gram-negative rods. और ये बैक्टीरिया आगे जाके फर्दर सिम्टम्स कॉज करेंगे जो कि आपको देखने को मिलते हैं मेनली बैक्टीरियल वेजिनाइटिस. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स that can lead to bacterial vaginitis? Risk factors. So the first risk factor here is sexual activity. Although the bacterial vaginitis is not sexually transmitted disease, but it can, the sexual activity is the main cause for this, okay? So, it has strong association with sexual activity. Okay. Secondly, obviously it is not classified as STD. ठीक है. क्यों? Why it is not classified as STD? Because यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एजेंट नहीं है जो स्पेसिफिक एजेंट कॉज नहीं कर रहा. एनी बैक्टीरिया, एनी ग्राम नेगेटिव, गार्डनेला वेजिनालिस, कोई भी बैक्टीरिया कॉज कर सकता है ये. ठीक है. Why it is not classified? Because it lacks specific agent. Okay. Second risk factor is douching. Third risk factor for this is smoking. So these are certain risk factors that you need to know for bacterial vaginitis. Now we'll discuss about the clinical features, how a female gonna represent at your clinic. So first, she will complain of what? She will complain of vaginal discharge. Vaginal discharge. और ये जो vaginal discharge होगा ना, ये normal discharge जैसा नहीं होगा. This will be thin, off-white, unpleasant odor होगा इसका, जैसे fishy smell will be there. So this is what? This will be thin, off-white, malodor. मेनली कैसा अडोर होगा? फिशी स्मेल होगी इसकी. फिशी स्मेल विल बी देयर. देन ठीक है. नाउ आई विल show you the image of bacterial vaginitis. So as you can see here, this is what? Thin watery discharge. ठीक है. और इसकी कैसा अडोर होगा? फिश जैसी गंदी स्मेल होगी इसकी. So just this is what? Bacterial vaginitis. Now how you gonna diagnose this condition? So for diagnosis, there is one criteria called as Amsel's criteria. इस क्राइटेरिया में एक्चुअली क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं? फर्स्ट इज पीएच. हमने बोला था नॉर्मल पीएच ऑफ वजाइना क्या होता है? नॉर्मल पीएच इज 4 to 4.5. बट यहाँ पे क्या हो रहा था? पीएच इज इंक्रीजिंग बिकॉज बैक्टीरिया की डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से वो एसिडिक पीएच मेंटेन नहीं कर पा रहा था.
सो यहाँ पे जो pH होगा that is more than 4.5. Okay. Second point that is included in the Amsel's criteria, that is on saline wet mount. On saline wet mount, what you gonna find? You're gonna see clue cells. Clue cells. ठीक है? These are the pathognomonic cells of the bacterial vaginitis. This is what? Pathognomic sign. Okay? ये जो क्लू सेल्स होते हैं ना, आपको ये माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होंगे. Microscopic examination. Okay. Now, ये क्लू सेल बेसिकली होते क्या है? What are these clue cells? These are nothing but the epithelial cells studded with bacteria. So these are epithelial cells studded with bacteria. Okay. Third thing that is included here is the whiff test. Whiff test, और इस whiff test का अदर नाम क्या है? That is amine test. Here, when you put 10% potassium hydroxide in the vaginal discharge, you can smell this thing, and उसकी smell कैसी होगी? Fish जैसी. Fishy smell will be there. So जब आप vaginal discharge में 10% KOH डालोगे ना, तो गंदी सी स्मेल आएगी. ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा? We have discussed already. This is thin, grayish, or you can say yellow-white, homogeneous discharge. Homogeneous means इसकी consistency same रहेगी. अब अगर इन 4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, अगर इनमें से 3 प्रेजेंट हैं आउट ऑफ 4, then our diagnosis is confirmed that this patient is suffering from bacterial vaginitis. Okay? So यहाँ पे confirm हो गया. और इस 3 पॉइंट में ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि होना ही चाहिए फॉर द डायग्नोसिस, दैट इज क्लू सेल्स, इंक्लूडिंग क्लू सेल्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है? नाउ इफ दे आस्क यू व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, सो व्हाट इज योर आंसर? गोल्ड standard for bacterial vaginosis is Nugent's score. Nugent's score. ठीक है? ये सबसे important है. अगर the score is more than 7, then our diagnosis of bacterial vaginitis is confirmed. Now, how you gonna treat this patient? So let's discuss about the treatment. So here we gonna give metronidazole. We're gonna give what?
metronidazole of patient, and what is the dose? That is 500 microgram TDS for how many days? For 7 days minimum. Okay. Other drug that you gonna give here, that is clindamycin भी दे सकते हो. Okay. ये drug either you can give orally or topically. Topical is much better. Why we gonna go for that all systemic absorption? So topically आप दे सकते हो locally area पे apply करने के लिए. That is the best way. Now let's discuss about the second type of vaginitis, that is Trichomonas vaginitis. So Trichomonas vaginitis is basically caused by a protozoa. So it is a what? Protozoal infection of urogenital tract. It is a infection of urogenital tract. Okay. Secondly, it can affect both the partners, male and female, both are infected here. So both partners are infected. But अगर पूछा जाए तो females are more infected than the males. Okay. So अगर किसी को Trichomonas vaginitis की infection है दोनों पार्टनर्स में से, तो आपको दोनों को ही ट्रीट करना है. ऐसा नहीं कि फीमेल को ट्रीट किया मेल को नहीं, या मेल को ट्रीट किया फीमेल को नहीं. तो दोनों को ही आपने ट्रीट करना है. जो मेल्स होते हैं ना, यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक. यूजुअली दे आर asymptomatic. Now, this Trichomonas vaginitis can cause the symptoms of urethritis as well. May cause symptoms of urethritis. क्या क्या symptoms हो सकते हैं ये? That is dysuria and increase of frequency. Dysuria or increase frequency of urination. And this is what? This is a sexually transmitted disease. Obviously, from one partner to another partner, it can be transmitted. Now, what are the symptoms you're gonna see here? Symptoms. So, what is the symptoms you're gonna see here? That is, there will be discharge, and this discharge is greenish yellow white color. This is greenish येलो इन कलर. ठीक है. और यहाँ पे सेकेंड क्या कंप्लेंट होगी इसकी? दैट इज इचिंग एंड डिस्यूरिया. इचिंग प्लस dysuria, or you can say increased frequency of micturition is present. Now, how you want to diagnose this condition? So, for the diagnosis, we generally do what? We do saline wet mount. And saline wet mount पे आपको क्या देखने को मिलेगा? There will be motile trichomonas. So, motile trichomonas is present on saline wet mount, and this is what? This is an investigation of choice basically. Now, if they ask you what is a gold standard investigation for Trichomonas vaginalis, so what is your answer? That is
Culture on diamond media. Culture on diamond media is the gold standard. Third test that you can do for the diagnosis, that is potassium hydroxide wet mount, and obviously this test will be negative here. Potassium hydroxide wet mount, and this will be negative. You can also do nucleic acid amplification test, and obviously by doing this test you can detect the Trichomonas vaginalis RNA. So you can detect Trichomonas. Next, you can also do VIV test, okay, and it can be occasionally positive. But ये जो है ना saline wet mount, around 60 to 70% cases में ये positive रहेगा. It is positive. So obviously इसीलिए हम saline wet mount ज़्यादा prefer करते. Now, what sign you gonna see here in case of Trichomonas vaginalis? Here you can clearly appreciate there is a small numerous ulcers over the vagina. So numerous ulcers present on vagina. तो इसीलिए हम इस वजाइना को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं. वी कॉल्ड इट एज स्ट्रॉबेरी वजाइना. वी कॉल्ड इट एज स्ट्रॉबेरी वजाइना, और what is another name, that is angry looking vagina. Or you can say it as colpitis macularis. Colpitis macularis. ठीक है, तो क्या क्या नेम्स देते हैं हम इसको? स्ट्रॉबेरी वजाइना, एंग्री लुकिंग वजाइना और colpitis macularis. Now let's see the image. See here, can you clearly appreciate these small ulcers over the vagina? So this is what? This is the strawberry vagina. Okay? और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? Trichomonas vaginalis में. Got it? Now how you gonna treat this patient? So for the management, what we gonna give? That is tablet metronidazole. कितना mg देंगे? First you will start with 2 gram. First you will give 2 gram single dose, and after that same metronidazole tablet. कितना? 500 mg for 7 or 8 days we will give. TDS for 8 days. Okay? And same way you have to treat the partner as well, because it is STD. For example, if a pregnant female comes to your clinic with the Trichomonas vaginalis infection, so how you gonna treat in that case? So in pregnancy, मेनली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास आती है ना वो, तो नो नीड टू गिव एनी ट्रीटमेंट. नो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन. बट अगर वो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आई आपके पास,
सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में. So in this case you will give same tablet metronidazole, 250 mg. Okay, 250 mg देंगे, same TDS for 7 days. Okay, so this is the treatment for Trichomonas vaginalis. Next, third vaginitis is candidal vaginitis. Candidal vaginitis. Okay, this is mainly caused by overgrowth of Candida species. Caused by overgrowth of Candida species. Okay, usually ये जो कैंडाइडा स्पीशीज होती है ना, ये नॉर्मली 10 to 20% विमेंस का क्या नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा होती है. दे आर यूजुअली नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा. और कौन सा ऐसा स्पीशीज है कैंडाइडा का जो नॉर्मली वजाइना में प्रेजेंट होता है? दैट इज कैंडाइडा एल्बिगन्स. कैंडाइडा एल्बिगन्स. ठीक है, ये नॉर्मली हमारी वजाइना में प्रेजेंट होता है. एंड कैंडाइडल वेजिनाइटिस, अगर कैंडाइडा एल्बिगन्स की ओवरग्रोथ हो जाए तो इट कैन कॉज वेजिनाइटिस. और what are the other species that can cause candidal vaginitis? Other species of candida that cause candidal vaginitis are what? That is Candida alberta, that is Candida gilberata, and second one was Candida parapilosus. So these are the other species that can cause candidal vaginitis. Now, what are the risk factor? Risk factor. So the first risk factor here is what? That is antibiotic use. Antibiotic use. ठीक है, जब आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो क्या होगा? जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है उसका डिप्लीशन हो जाएगा. एंड देन क्या होगा? एसिडिक पीएच मेंटेन नहीं होगा, तो दैट इज मोर जो हमारी वजाइना दैट इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. सो दिस एंटीबायोटिक यूज लीड्स टू डिप्लीशन normal vaginal flora. Okay, and there will be what? There will be vaginitis. Second risk factor is the diabetes. तो इसीलिए हमने क्या कराना है इनमें? HbA1c screening you should do. Third risk factor is what? That is immunosuppression. इम्यून सप्रेशन हो गया तब भी वेजिनाइटिस हो सकती है. एंड फोर्थ वन इज यूज ऑफ OCPs, ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. जब आप यूज करोगे तब भी कैंडाइडल वेजिनाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, now what are the symptoms? Let's discuss about the symptoms. Here
डिस्चार्ज विल बी देयर, डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा, और ये डिस्चार्ज कैसा होगा? वाइट कलर का कर्ड लाइक डिस्चार्ज, कर्ड लाइक वाइट थिक थिक क्लम्पी डिस्चार्ज होगा, ये थिक क्लम्पी डिस्चार्ज। इसको कर्ड लाइक, और यू कैन से हम इसको कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज भी बोलते हैं, कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज। ओके, what is the other symptom? Dysuria will be there, and जो most common symptom होगा यहाँ पे, that is pruritus, बहुत intense itching होगी इसमें, pruritus, and there will be what? There will be erythema of vulva and vagina. Vulva and vagina. Okay, vaginal mucosa mainly. ठीक है, so these are the various symptom. क्या है? डिस्चार्ज होगा, और वो कैसा होता है? वाइट थिक क्लम्सी डिस्चार्ज होगा, जिसको हम कर्ड लाइक या कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज बोलते हैं. देयर विल बी डिस्यूरिया, मीन्स इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन. सो मोस्ट जो डोमिनेंट सिम्टम होगा ना, जिस वजह से फीमेल आपके पास क्लिनिक में आएगी, दैट इज इंटेंस इचिंग. उसको बहुत गंदी वाली इचिंग होती है इसमें. एंड अदर इज एरिथेमा ऑफ vulva or vaginal mucosa. So you should remember these symptoms. Now we'll see the image. So as you can see here, can you clearly appreciate this curd-like or cottage cheese-like appearance in the vagina? This is what? Curd-like discharge. और ये किसका image है? This is candidal vaginitis. Okay, now how you want to diagnose this condition? So first, what is the normal pH of our vagina? Normal pH is 4 to 4.5. तो यहाँ पे pH को कोई नुकसान नहीं होगा, that will be normal. 4 to 4.5 ही होगा. This is the only vaginitis where pH is normal. Now, what is the investigation of choice for this? Investigation of choice is saline. So saline microscopy is the investigation of choice. Here you're gonna see the fungal hyphae. Fungal hyphae is present on saline microscopy. And if they ask you about the gold standard investigation, that is culture on Sobart's medium. Okay, you will culture the discharge on the Sobart's medium. Now, how you gonna manage this patient? So management. So for the management, what we're gonna do? We will start the treatment with fluconazole. So capsule fluconazole. ठीक है, कितने mg? 150 mg will give stat. Okay, and if the female is pregnant, so फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये आपके पास आती है सेम कंप्लेंट्स के साथ, देयर इज अ नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो ट्रीटमेंट. बट अगर ये सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास आएगी, तो व्हाट यू गोना गिव? यू कैन गिव क्लोट्रिमाजोल और मिकोनाजोल. कैन गिव क्लोट्रिमाजोल
or muconazole. Okay. For what? For local application. Got it? And this vaginitis can reoccur. Okay. So guys, this is all about the vaginitis. I hope you guys like this video. So thanks for watching.